Now refresh your page and check. सर आ गई सर, लाइव आ गई हम। Okay, okay, okay. All right. So let me take you here also in this class. यहाँ क्लास में भी आपको बोर्ड दिख रहा है मेरा ना? हेलो. यस सर। ओके. ऑलराइट. सो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि अगर किसी मल्टीप्लिकेशन के यूनिट डिजिट पोजीशन रिजल्ट में यूनिट डिजिट पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी उसके रिगार्डिंग। तो हमने यहाँ पे 3 प्रोसीजर को समझा था। अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है और उस पर कुछ पावर चढ़ी हुई है, उसको सॉल्व करने के बाद उसके यूनिट डिजिट पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी, इस तरह के सवाल अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो पहला प्रोसीजर ये था कि अगर कोई संख्या जो ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड, आप इसको समझ सकते हैं टेम्पलेट है, या एक स्टैंडर्ड, ये एक जिसको कहेंगे कि एक सेटअप है जिसमें कि आप अलग अलग वैल्यूज़ को देखेंगे, उसके पावर चढ़ी होगी और उसको सॉल्व करने के बाद आपसे पूछेगा उसकी यूनिट डिजिट पोजीशन क्या है। तो प्रोसीजर ये कहता है कि यूनिट डिजिट जो इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर की अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 अगर है, ओके, आप ध्यान से देखिए 2 3 7 8 है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको ये करना होगा कि जो भी पावर उसकी चढ़ी होगी उस पावर को 4 से आप डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 2 3 में से कोई संख्या आती है तो आप उसको उस पर उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके, रिमाइंडर के ऊपर सुपर इम्पोज करके और उसको सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बेसिकली उसकी यूनिट डिजिट पोजीशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उस केस में आपको वही जो 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 नंबर है उसकी यूनिट डिजिट पोजीशन पर आपको पावर 4 चढ़ानी पड़ेगी और उसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हमने समझा था। जैसे अगर एक संख्या दी है, मान लीजिए 737, ओके, रेज टू द पावर 432, और इसमें हमको पता करना था कि इसको सॉल्व करने के बाद इसकी यूनिट डिजिट पर क्या संख्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी। तो उसको हमने यहाँ पे देखा। तो देखिए यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ब्रैकेट के अंदर, उसमें संख्या कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। तो यानी प्रोसीजर नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई होगा, जिसमें इस पूरी पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 432 डिवाइडेड बाई 4, आंसर यू विल गेट 108। और उस केस में रिमाइंडर क्या आया, 0। और रिमाइंडर 0 आया तो यानी कि यूनिट डिजिट पोजीशन यहाँ पे 7 थी, 7 की पावर आपने कर दी 4 और उसको सॉल्व किया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर विच विल बी 49 इंटू 49, एंड 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81। हेंस द यूनिट डिजिट पोजीशन इज नथिंग बट 1 वैल्यू। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रोसीजर ये था कि अगर ब्रैकेट के अंदर दी गई संख्या के अंत में अगर 0 1 5 6 में से अगर कोई संख्या दी गई है तो उस केस में सॉल्यूशन के बाद यूनिट डिजिट पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी उसको कैसे चेक करेंगे। तो उसको चेक करने का तरीका ये था कि अगर, म्यूट कर लीजिए सभी लोग, अगर ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी गई है उसकी लास्ट डिजिट 6510 है, तो नो मैटर उस पर कितनी भी पावर आप चढ़ा दीजिए। जैसे पहली संख्या में आप देखिए 2456 रेज टू द पावर 445, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह से अगर 995 दिया है और रेज टू द पावर 9, तो सॉल्व करने के बाद उसकी यूनिट डिजिट पर संख्या वैल्यू क्या आएगी, 5। अगर एक वैल्यू नंबर है 1211 और रेज टू द पावर 1211 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी यूनिट पोजीशन पर वैल्यू आएगी 1। दूसरी अगर एक संख्या दी हुई है, मान लीजिए 125010 रेज टू द पावर 572, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद भी जो इसकी यूनिट डिजिट पर जो संख्या आएगी वो होगी आपकी 0। तो ये प्रोसीजर 2 है जिसमें कि ब्रैकेट के अंदर दी गई संख्या की लास्ट पहली यानी कि यूनिट डिजिट पर अगर 1 0 है, 1 है, 5 है, 6 है और कुछ भी पावर चढ़ी हो उसकी XYZ कोई भी पावर हो, उसको सॉल्व करने के बाद उनकी यूनिट डिजिट पोजिशन पर ये वैल्यू आएगी। देन प्रोसीजर नंबर 3 हमने देखा था कि अगर एक यूनिट डिजिट एंडिंग विद 4 और 9 दिया हुआ है, देन जो भी पावर है उसको आप दो से डिवाइड करेंगे
और 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर अगर मान लीजिए अगर 1 आता है तो उस केस में आप वो जो उसी यूनिट डिजिट पर वो पावर चढ़ा दीजिए 1, और जो सॉल्व करेंगे वो आंसर आएगा। दूसरा रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उस केस में आप पावर 2 चढ़ाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट पर क्या संख्या आएगी वो आप मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में 974 रेज टू द पावर 41, और आपसे सवाल पूछेगा कि इसको सॉल्व करने के बाद इकाई के स्थान पर क्या संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले से ये देखना है कि जो संख्या दी गई है उसके लास्ट में क्या दिया था 4, यानी कि अब जो पावर है ये 41 उसको आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 1, यानी अब क्या करेंगे 4 रेज टू द पावर 1 चढ़ा दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा 4। यानी कि इस पूरी संख्या को यानी 974 रेज टू द पावर 41 को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इकाई के स्थान पर क्या संख्या आएगी 4। ओके, तो ये प्रोसीजर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और यही तीनों प्रोसीजर को एक कॉमनली एक प्रॉब्लम में हमने इसको समझा था, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर सिंपल क्वेश्चन के अलावा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं तो वो इस तरह से आएंगे कि 23 रेज टू द पावर 32, 45 रेज टू द पावर 77, 99 रेज टू द पावर 75, एंड यू आर सपोज टू सॉल्व इट, और डू नॉट नीड नॉट टू सॉल्व इट, बट आपसे पूछेगा कि सॉल्व करने के बाद इसको हल अगर किया जाए तो अगर हल करने के बाद इकाई के स्थान पर क्या संख्या आएगी उसको निकालिए। तो हमने 23 वाले जो 3 प्रोसीजर अभी देखे उन तीनों प्रोसीजर को हमने अलग अलग पहले इन पर डिप्लॉय किया, जिससे पहले में 1, दूसरे में 5 और तीसरे में 9 इकाई के स्थान पर संख्याएं आई, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, और वहां से हमको ये पूरे के पूरे रिजल्ट में इकाई पे आने वाली यूनिट पोजीशन पे आने वाली संख्या की जो मान है वो हमको पता चल गया। ओके, so this is the thing which we have studied in the last lecture with some of your students, and now today's, am I audible? Yeah. Yes, sir. Okay, so now we are going to discuss today the another important concept related to factorial. Okay, so today we are going to discuss about the factorial. Okay, and this is very important, and from your competitive as well as examination point of view as well as campus placement point of view also. Okay, and this factorial is symbolically represented by either this or this symbol. Okay, so this is the symbol of to represent the factorial, and as we know the factorial of any value, let's say in general factorial n is given by 1 into 2 into 3 into ... up to n. Okay, for example, if somebody asks you what is the value of factorial 5, then tell me how we can do it. Or this can also be written as factorial 5 value, and this is nothing but equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Means you are supposed to write the value for starting from 1 up to the value which is written in the factorial, and you are supposed to simplify it, then you will get the value of that factorial. Means factorial 5 is nothing but 1 into 2 into 3 into 4 into 5, which is equal to 120 value. Okay, now question is not asked in a simple way that you are supposed to calculate the factorial of this value, but he may be interested to know that find the number of 0 at the end of factorial n. Okay, so this is a bit tricky questions, and most of the standard competitive exam this type of question has been asked a lot of time. Means problem may be asked you like find the number of 0 at the end of n factorial. Okay, so how to do that? Let's try to understand. Okay, for example, let's take one example, and you are supposed to find the
number of 0 at the end of 120 factorial. Okay. So you are supposed to find, means, because of course the 120 factorial is a very big number. Okay, and you are supposed to, means if you are do it by your calculator or you by yourself only, then it is quite impossible that you have to find the factorial of this big value. Okay, but there is a trick. Okay, and if you follow that trick, then you will be able to answer this kind of question. And the simple procedure to find this kind of solution means procedure, and procedure says divide by 5 and take divide by 5 and take the integral and take the integer part, take integer part only. Okay, so let me correct, let us take this value 126 factorial. Okay, 126 factorial, let's increase 6 more. Okay, अगर ये संख्या दी हुई है, अब आपको क्या करना है कि इस फैक्टोरियल 126 को सॉल्व अगर करें तो उसके आखिरी में कितने जीरो आएंगे, इसको आपको एनालाइज करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? आप जो भी फैक्टोरियल दिया गया है, सिंपल तरीका है, आप उसको 5 से डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर वैल्यू आएगी उसको नोट करना है, बाकी चीज़ को छोड़ देना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है 126, तो 126 को आपने 5 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25. Okay, 25 बार ये डिवीजन पॉसिबल है। देन फर्दर दिस 25 विल बी डिवाइड बाय 5, you will get the value 5, and then further this 5 will be divided by 5, then you will get the value 1. And if you add all these three values, okay, if you add all these three values, this is nothing but 25 plus 5 plus 1, which is equal to how much? 31. And this 31 zeros you will get after the simplification of factorial 126. Is it so or not? Can you solve it by your calculator or any software program? Or try to ask from Google also what is the value of factorial 126. Might be they will be able to give you the answer, but the thing is, if you follow this trick, then you will able to this much of zeros at the end of the factorial 126 you will get. So just imagine what the number will be. Okay, all right, so it's this concept is clear? Yes, hello? Yes, sir. Okay, so let's try to solve another example, and on the basis of the same node, and you give me the correct answer that I am going to write this problem in this is another example, and आप सभी लोग इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं। फाइंड द number of zero at the end of let's say 99. Okay, 99 factorial. if 99 factorial दिया है, उसमें आपको बताना है कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसमें कितने जीरोज आएंगे इसके एंड में। जरा फटाफट सॉल्व करके बताइए। 22. वेरी गुड। हु सेज? किसने बताया? नाम बताइए अपना। श्रद्धा। वेरी गुड श्रद्धा, एब्सोल्युटली करेक्ट, because if you are following the procedure, then you first of all this 99 will be divided by 5. What you will get? 19. Yes, hello,
Yes, sir. 19 and 3. And then this 19 will be divided by further 5. What you will get? How many times the division is possible? 3. 3. And then this 3 will be further divided by 5. How many times it will goes? It will goes nothing but 0 only. Okay. Then you are supposed to add all these values. So if you add these two values, how much you will get? 22 only. Okay. So 22 zeros you will get if you solve this factorial 99. Okay, in which the end at the end of this value you will get. So this concept is clear. Now let's try to solve another interesting problem based on factorial, and that problem is like this. Means you are supposed to find the highest power, of x in n factorial. Okay, find the highest power of x in n factorial. Okay, so this is again a very tricky question, and there are two different cases we have to assume here, in which the first case says, let's say the case number 1. Okay, before that let's take our standard example to understand this thing. Let's take case 1, and of course in this entire thing will be based on our let's say factorial 5 example, and factorial 5 is nothing but 120. We have solved it, and this 120, if you write in the prime factorization form, then this can be written in the form of 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 1 into 5 raised to the power 1. In the previous lectures also we have discussed this concept, how to do the factorization and how to write the prime factorization of anything. So let's take the case number 1, and the case number 1 says when the highest power, or let's say in this way, अगर आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, और अगर उसमें हम क्या कंसीडर कर लें कि व्हेन x is prime, है ना, देन क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एक संख्या दी गई है, उसमें कहा है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 in 120 factorial. Okay, find the highest power of 7 in 120 factorial. Then how to solve it? Okay, again the procedure is quite similar, which we have seen in the previously 0 cases, because here x is equal to 7. Okay, x is equal to 7, which is a prime number. Yes, hello. Yes, sir. And n is equal to, if you following the find the highest power of x in factorial, and means x we are considering here 7, which is a prime number, and n is given to you is 120. Okay, so as per the procedure, what you have to do, you have to first of all divide this 120 by 7. How many times this division is possible? Hello, tell me, कितनी बार जाएगा? 17. 17. Very good.
Then further 17 will be divided by 7. How many times the division is possible? 2. And further division is not possible. So whatever the result you will get, simple add it and you will get your answer, means 19. So if this means if you solve it, find the highest power of 7 in the factorial 7, means if you do the prime factorization, okay, if you do the prime factorization of the value which you will get after solving the 120 factorial, in which the 7 raised to the power 19 you will get. Okay, it's clear? Hello, this concept is clear? Okay, now let's take another example. For example, in this example, find the highest, solve करिए सभी लोग, highest power of 3 in factorial 120. So tell me what will be the answer. And similarly, take another problem, means 57. very good. Similarly, take another problem, find the highest power of 3 in factorial 25. बताइए, आकाश मिश्रा हैं हमारे साथ? हाँ, 10. yes, absolutely correct. तो हाउ मच टाइम? ओके, अभी हमारे पास है थोड़ा सा समय, तो हम यहाँ पे और भी केसेस डिस्कस कर सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई सबको? हेलो. Yes, sir. Okay, let's take another case 2. And in case 2, if we consider when x is not prime but can be written as product of two different prime, okay, means like x is equal to p1 into p2. Then how to solve it? So in that case, the rule or the thumb rule what you have to follow is that you have to select largest prime for the same procedure. Okay, for example, find the highest power of 15 in 78 factorial. Okay, find the highest power of 15 in the 78 factorial. So as you can see in this case, the 15 class लेते हैं. So in this case x is equal to 15 is given, and this 15 is not a prime, but yes, it can be written in the product of 2 prime, means this can be written as 3 into 5,
Okay, 3 into 5. Then you have to choose the largest value of prime, means you have to choose 5 and do the same procedure. Okay, so now you choose 5, then you have to divide 78 by 5. You will how much how many times division is possible? Hello? 15 times. 15 times, very good. And then further this 15 will be divided by 5. How many times? 3. Okay, so if you add these 15 and 3, you will get 18. So okay, so the find the highest power of 15 in the 78 factorial is nothing but 15. Means if you do, if you solve this 78 factorial, then whatever the value you will get, and if you means do the prime factorization, or if you try to solve or do the prime factorization, and if you want to get the value, means 15 raised to the power, how much you will get, then this will be 15 raised to the power 18 you will find in as a one factor of this value if at 878 factorial. Okay, so this concept is clear? Yes. Yes, sir. Okay, so try to solve another problem based on this and tell me the answer. Let's take an example, means find the largest power of 22 in 195 factorial. बताइए भाई कितना आएगा? Nineteen. 15. 18. 19 or 18? 18. 18, sir. Very good. Yeah, 17 the plus 2. answer is 18. And how you will get this answer? Of course, the explanation is simple. Means you have 195, this 195, sorry, you have where is the result? Yes, we have this 22 could be written as 2 into 11 then you have to choose 11, then you will simply divide 195 by 11. How many times division is possible? 17 times. 17. Then 17 will be divided by 11. It one times possible, simple add this 18, and then your answer is 18. Means 20 raised to the power 18 you will get as a one factor if you solve 195 factorial. Okay, so this concept is clear now. Yeah, now let's discuss the case number 3rd in this series of factorial. And in this case when x is not a prime, x is not a prime, but x is equal to y raised to the power p, where y is prime, where y is prime. Okay, for example, if you have means let's take an example. Find the largest power of 8 in 50 factorial. Okay, in 50 factorial, then how to solve it? Okay, so as per the procedure, as you can see here, x can be written as क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 3. Yes, this 8 can be written as 2 raised to the power 3 or not? Yes, sir. And n value is given to you as Yes. n value is given to you as 50. Okay,
n value is given to as 50. So here y, as per the standard representation, x is equal to y raised to the power p. So where, what is y value here? Y is nothing but 2. Yes, hello, Yes. y is 2. Now what happened? Yes, sir. The procedure says, means 50 will be divided by 2. How much you will get? You will get 25. Then this 25 will be divided by 2. How many times division will go? 12. Then 12 will be divided by 2. It will be 6. Then 6 will be divided by 2. You will get 3. Then 3 will be divided by 2. You will get 1. And if you add all these values, how much you will get? You will get 47. Okay, 47. It means if you do the calculate the factorial 50 and somebody asks you that what is the highest power of 8 as a factor you have in this factorial 50 value, then you will say it's a 8 raised to the power 47. It's a huge value actually, but you can, with this tricks you can able to calculate the this value. Okay, so p is equal to, here p is equal to 3, p is equal to 3 in this case. Further the result says, let me just do one more thing, because this is not the final answer. Here you will get 47, here you will get 47 value, and this for here in this y, x is equal to y raised to the power p notation, y is 2 and p is equal to 3. So the final answer will be your 47 divided by 3, and which will division will be possible how much times? 15 times. Okay, so 15 is actually correct answer. So let me correct myself. Earlier I told you that 8 raised to the power 47, and it's not 8 raised to the power 47, but 8 raised to the power 15 value will be the correct answer. Okay, so just take last example for today's session, and in which you are supposed to find the largest power of 81 in 120 factorial. Calculate it and tell me the answer. Okay, so I am going to